Good morning students. So today we have to start a new topic of the same chapter, that is chemical reactions. So new topic जो है chemical reactions का, तो वो है displacement reaction. So last video we have seen that is the combination reactions, next one the decomposition reactions. So next start the displacement reaction. So what are displacement reaction? Displacement reactions क्या है? So here high reactive element get replaces and low reactive element get displaces, then the reaction is said to be displacement reaction. देखो displacement reaction, displacement जो reactions है वो reactivity पे बहुत depends करते हैं. Displacement reaction. So what is the displacement reaction? यानी कि क्या है displacement? So displacement यानी कि one substance that is high reactive element get replaces and low reactive element get displaces, then the reaction is said to be displacement reaction. So high reactive element get displaced, high reactive element get replaces and low reactive element get displaces, then the chemical reaction is said to be displacement reaction. So what is by means displacement reactions? So high reactive element get replaces and low reactive element get displaces, then the reaction is said to be displacement reaction. अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल कौन कौन सा है? सो देखो जो पहला जो रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड या फिर व्हाट एवर द सीबीएसई. सो पर्टिकुलर रिएक्शंस में एग्जाम्पल अगर हम आयरन लेते हैं और आयरन की रिएक्शंस अगर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, so solid iron rod dip in copper sulfate solution, that is aqueous state, so it get converted to FeSO4 ferrous sulfate plus Cu get displaces, so it is the aqueous solution and next one the Cu solid is formed. So here iron get react with the copper sulfate, blue color solution of the copper sulfate solution, then the color means इसका जो color है वो blue color है. So blue color of the copper sulfate get fade out and get converted to green color, that is the iron sulfate or फिर iron means particularly ferrous sulfate. So it is the iron sulfate or ferrous sulfate substance, that is the green color solution is obtained, and next one is the copper get displaces. So it is one is the copper. So why this reaction is causes? ये जो reactions है वो क्यों होते हैं? So reaction is caused due to the what we call it as the reaction is caused due to the means there is difference in the reactivity, that is the iron. जो iron है वो high reactive है as compared to copper. So copper के जगह पे iron आएगा और copper जो है वो displace होगा. So it is one is the displacement reaction. अगर next example देखा जाए तो for example Zn zinc rod dip in copper sulfate solution, then the blue color copper sulfate, the color of blue color get fade out and colorless solution is obtained. So यहाँ पे क्या होगा? ये है zinc solution, so sorry zinc solid rod या फिर zinc metal and copper sulfate, that is the aqueous solution. So it is means blue color of the copper sulfate solution get fade out, blue color copper sulfate get fade out and get converted to zinc sulfate ZnSO4, बराबर है. So it is the colorless solution is obtained, colorless solution of the zinc sulfate is obtained, and the chemical reaction is said to be displacement reaction. So this is one is the displacement reaction. So ये हो गया displacement reactions के बारे में. Another one is the means जैसे कि जो high reactive element अगर हम लेते हैं
जैसे कि Pb वगैरह. So Pb react with the copper sulfate, also Pb also displaces the copper from the copper sulfate solution and it get converted to PbSO4 and copper get displaces. So these are all reactions related to this displacement reaction. So आप लोगों को ये ध्यान में रखना है क्या पर्टिकुलर जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो रिप्लेस होता है और जो लो रिएक्टिव एलिमेंट सब्सटेंस है वो डिस्प्लेस होता है. Then the chemical reaction is said to be displacement reaction. Then the reaction is said to be displacement reaction. Next one is the double displacement reactions. पहली जो रिएक्शन थी वो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे अब सेकंड टाइप जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? When precipitate is formed by exchange of ions, it is called as the double displacement reaction. So reaction where the precipitate is formed by exchange of ions between the reactants, it is called as double displacement reaction or it is also called as precipitation reaction. So हम definition लिख सकते हैं when precipitate is formed, when precipitate is formed by exchange of ions from cations and anion, that is the from the reactants is called precipitation. Or double displacement reaction displacement reaction. So this is the double displacement reactions. What happen in case of double displacement reaction? So in case of double displacement reaction, the exchange of ions, the precipitate is formed by exchange of ions of reactants or from reactants is called precipitation reaction or double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में जो रिएक्टेंट के साइड में जो रिएक्टेंट्स है जिसमें आयंस है, यानी कि स्पेशली दिस रिएक्शंस इज टेक्स प्लेस इन द आयनिक फॉर्म्स सब्सटेंसेस. जनरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो फॉर एग्जांपल CuCl2 प्लस Ki. Cu एग्जांपल अगर देखा जाए CuCl2 दैट यानी कि कॉपर क्लोराइड. सो कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन या फिर कॉपर क्लोराइड सब्सटेंस रिएक्ट विद Ki, पोटेशियम आयोडाइड. इसका जो नाम है वो है पोटेशियम आयोडाइड. सो get converted to Cu(I2), copper iodide and next one the KCl. So यहाँ पे 2Cl है तो यहाँ पे twice, यहाँ पे 2K है तो इधर के साइड में twice. So this is the potassium chloride. This is potassium chloride is obtained. So यहाँ पे जो precipitate है, so precipitate Cu(I2) is obtained by the exchange of ions, that is CuCl2 plus twice Ki get converted to Cu(I2) plus twice KCl. So this is the one of the examples of the displacement reaction, double displacement reaction. Another one is the next one, that is the, for example, silver nitrate treated with silver nitrate, that is AgNO3 treated with sodium chloride. This is one is the silver nitrate solution, silver nitrate treated with sodium chloride. क्या है ये? sodium chloride get converted to silver nitrate treated with the sodium chloride, it get converted to AgCl, यानी कि इधर के साइड में Ag और इधर के साइड का Cl, so it get converted to AgCl. precipitate is obtained, ग्रे कलर precipitate मिलेगा ये. so particularly silver, इसका नाम जो है वो है silver chloride. so silver chloride is obtained by exchange of ion. so AgCl and NaNO3 plus NaNO3 is obtained, that is sodium nitrate. So sodium nitrate solution is also obtained.
So this is the chemical reactions where the exchange of ions get converted to particularly products. So silver nitrate treated with sodium chloride get converted to AgCl plus silver nitrate. So sodium nitrate. So AgNO3 get react with solid NaCl get converted to AgCl plus NaNO3. Another one reaction is the here the precipitate, that is the AgCl, white color, whitish grayish color का precipitate मिलता है यहाँ पे by the exchange of ions Ag and Cl ions. क्योंकि आयंस Ag पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, so Ag positive and Cl negative give rise to AgCl. This is the whitish color precipitate is obtained and NaNO3, that is the sodium nitrate, is also obtained. Another one is the next अगर एग्जांपल देखा जाए तो particularly for example barium sulfate and next one is the potassium chromate. Examples है barium sulfate BaSO4 plus potassium chromate K2CrO4 potassium chromate. So it get converted to यहाँ पे Ba डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव, इधर के K1 पॉजिटिव अगर दो है तो दो पॉजिटिव और CrO4 डाई नेगेटिव. सो K and SO4 it get converted to K2SO4 and barium chromate is obtained. Barium chromate BaCrO4 is obtained. So here the precipitate is formed by exchange of the anion and cation. It is called as the what we call it as, it is called as exchange of the chemical reaction where the exchange of ions get converted to product, that is PPT. It is called as double displacement reaction. So इसका नाम जो नेम है वो क्या है, बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट. नेक्स्ट वन इज द पोटेशियम क्रोमेट. पोटेशियम क्रोमेट. Next one is the potassium sulfate, potassium sulfate and barium chromate, barium chromate, barium chromate. So this is the chromate, sorry chloride हो गया, chromate. So barium chromate is the PPT is obtained. So the chemical reaction where the exchange of ions, that is the cation and anion from the reactant side get converted into products, that is PPT, precipitate is formed. Then the chemical reaction is said to be double displacement reaction. In first chemical reaction, that is copper chloride treated with the potassium iodide get converted to CuI2 copper iodide and potassium chloride is obtained. Next one is the Ag silver nitrate treated with the sodium chloride get converted to AgCl, that is silver chloride, and sodium nitrate is also obtained. Next one the barium sulfate plus potassium chromate. Here K2SO4 or barium chromate. This is one is the one means another examples of the double displacement reaction. अगर हम और एक आधा एग्जांपल देखते हैं जैसे कि बेरियम सल्फेट प्लस जिंक बेरियम सल्फाइड प्लस जिंक सल्फेट. बेरियम सल्फाइड BaS जो है बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड. So barium sulfide treated with zinc sulfate SO4, that is zinc sulfate, zinc sulfate. मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा. देखो अगर SO4 ग्रुप है डैश SO4 ग्रुप यानी कि डाई पॉजिटिव डाई नेगेटिव, सो इस ग्रुप को बोलते हैं हम सल्फेट ग्रुप. ये आप लोगों ने लिख लेना चाहिए, ठीक से ध्यान में रखना चाहिए. अगर SO3 ग्रुप है डाई नेगेटिव, सो इसको बोलेंगे हम सल्फाइड, इसको बोलेंगे हम सल्फाइड. ये है सल्फेट, ये है सल्फाइड. और अगर डैश यस है सो इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलरली, ये भी डाई नेगेटिव, सो ये है सल्फाइड. सो ये फिर से हमें ध्यान में रखना है. सल्फाइड क्या है, सॉरी यहाँ पे सल्फाइड DE है. पहले वाला है सल्फेट, सेकंड वाला है सल्फाइड और यस जो है वो सल्फाइड. सो ये हो गया बेरियम सल्फाइड और ये हो गया जिंक सल्फेट. सो कुल मिला के यहाँ पे अगर एक्सचेंज होता है
तो हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस जिंक सल्फाइड। सो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट मिलेगा बेरियम सल्फेट, बराबर है। सो इट इज द बेरियम सल्फेट एंड नेक्स्ट वन द जिंक सल्फाइड। So that is the zinc sulfide is obtained. So the chemical reaction where the precipitate is formed by the exchange of ions, it is called as the double displacement reaction. So in all this type of reaction, अभी तक हमने जैसे कि पहले वीडियो में मैंने मीन्स कॉम्बिनेशंस के बारे में वीडियो बनाया था, नेक्स्ट वीडियो जो है वो डिकम्पोजिशंस के बारे में बताया था, उसमें हमने डिटेल में उसके टाइप भी स्टडी किए। बाद में अभी ये जो वीडियो है वो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सो इन ऑल दिस वीडियो जो केमिकल रिएक्शंस है वो किस यानी कि पर्टिकुलर जो केमिकल रिएक्शंस है उसका जो रेट है, कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्ट में होगी, कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो होगी, या फिर पर्टिकुलर जो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शंस यानी कि मीन्स इसको बोलेंगे हम स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो स्पीड ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है। इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बनाया था, जैसे कि रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले ही। सो वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, इसके पहले वाले जो बनाए थे। सो इसके लिए आप राहुल तंतरपाड़े या फिर तंतरपाड़े सर एडवांस साइंस ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेक्स्ट गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल वीडियो, बराबर है। सो ये हो गया सभी टाइप्स के बारे में, यानी कि हमें अभी तक जो कॉम्बिनेशंस के बारे में देखा था, नेक्स्ट वन द डिकम्पोजिशन के बारे में, नेक्स्ट वन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नेक्स्ट वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमें देखना है यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और जो केमिकल रिएक्शन है जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस और रिडक्शंस रिएक्शन। इसके लिए मुझे फिर से एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। सो प्लीज मीन्स वॉच दिस वीडियो एंड टेक योर नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो।